इस ओवर की, और ये बच गए। तो लगा कि शायद 3 विकेटें निकाल ली होगी, बट 2 विकेट इस ओवर से लिया है, और 20 रन पे 3। वेस्ट इंडीज पूरी तरीके से ऑन सॉन्ग है, और बेनेट का आज बोनट जल्दी खुल गया। बेनेट का आज बोनट जल्दी खुल गया क्योंकि वहां पे आज जल्दी आउट हो गए वो, और अब उनके आगे एवरेज लिखा आ जाएगा क्योंकि इस बार एक भी बार आउट नहीं हुए थे इस पूरे टूर्नामेंट में। पर कल का बड़ा रोमांचक मैच है यार। एक तरफ है पाकिस्तान, दूसरी तरफ है इंग्लैंड। वाओ, आई मीन वो इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है। और आज तो मुंबई में वेस्ट इंडीज ने इतना धोया है, इतना रगड़ा है जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को। ना तो पानीपुरी के रगड़े में रगड़ा नहीं देते मुंबई वाले, जितना यहाँ पे इन्होंने रगड़ा है। और यहाँ पे एक अच्छा गेंद शिमार जोसेफ, सॉरी मैथ्यू फोर्ड का। हो, क्या बैटिंग करी आज वेस्ट इंडीज ने, क्या जबरदस्त बैटिंग। मीन 254 रन वो बोर्ड पे लगा दिया, और यहाँ पे एक अच्छा शॉट 4 रन के लिए, क्या खूबसूरत हिट बाउंड्री के लिए। मारूमानी का विकेट निकाला था, और यहाँ पे एक अलग ही अप्रोच चल रहा है वहां पे वेस्ट इंडीज क्रिकेट के सामने जिम्बाब्वे का भी, क्योंकि जिस तरीके से बैटिंग करी है इन लोगों ने, इन्होंने। एंड हेलो सर, हाउ आर यू? वेलकम टू द क्रिकेट शो। It's a pleasure to welcome you on the show. It's a cricket related podcast which is in episodes very soon. Hello, sir. Hey, Tavish, how you doing? Absolutely fine, sir. From which country you are listening this podcast? Well, I'm joining from Brussels, Belgium right now, but I'm from St. Lucia in the Caribbean. So I'm following the match whilst on vacation with my wife. Well, the Caribbean flavor is back in T20 World Cup 2026. The way they are playing. Yes, a brilliant there by the West Indies batsman, especially after the first couple of overs, really picking things up. Hetmyer, I think, is in the form of his life. And Powell, who had not looked really good going into this match, really showed his credentials. We can say that Hetmyer, a lot to admire. Yes, brilliant performance today by the batting unit. Hetmyer really anchoring things there. And, obviously, a bit of misfortune for Zimbabwe. Sikandar Raza not only getting injured, trying to effect a catch, but also losing his spot in the batting lineup, it looks like, because I understand he was taken straight out of the ground. 1 or 2 drops there from Zimbabwe as well, allowing West Indies to get off. But, it's not really about the chances that you give up, but about what you do when you get that second life. And West Indies, Sydney, making the most of the second life and setting a really tremendous total, second highest ever in World T20, joint most sixes with 19. Some tremendous hitting there.
Oh my goodness, 19 sixes. That means it's 114 runs just came with the sixes. I mean, and at that time Just from boundaries. when I was watching the game, it's I think 15 sixes, 15 fours. That means, I mean, around 60 and 90, 150 runs came to the boundary. I mean, serious, Yes. insane power by West Indies, and I think Yes. they liked India. I mean, liking batting in India, especially in the conditions like, oh, I mean, what to say about it? I mean, conditions like Mumbai, Well, Ahmedabad. they do like India, yes, but especially I think the Wankhede Stadium in Mumbai, as you say, they did play two of the group matches there, and in my preview of of this particular match for St. Lucia Times, I noted that the West Indies had played two of their group matches at the stadium, whereas Zimbabwe had played all of their group matches in Sri Lanka. And so they had no familiarity of the conditions. And of course, conditions are so important in cricket. So for West Indies to remain in somewhere that they were familiar and that they were happy. And I think Rovman Powell, after the innings, was interviewed and said that the fact that they were in 1K was great for them because they enjoy the conditions and they enjoy that stadium, that environment. Familiarity obviously is good. Comfort is good. So the fact that they were able to remain somewhere that they are already used to how things operate, just the logistics, and then of course the actual conditions, the pitch and so on, must have been really good for them and made them very conducive to setting that kind of total. Well, absolutely. And Aditya Bhai is saying hello, and he's actually the most loving person of the show. And as you know, the show is about to complete its 1,000 episodes. I mean, it's something very special. And tell me something about the Darren Sammy coaching, because the way he's doing the coaching, and right now it's a six and a fantastic six. There's a boundary in the over earlier, and Myers is looking different tonight. Is he going to chase down this target, or even how the conditions will be familiar for Zimbabwe when they are playing to be against India in Chennai? Yes, it's going to be difficult, I think, again for Zimbabwe. Zimbabwe, I think, really the fairy tale team in this tournament so far. Not many people would have expected them to advance. They did have some lucky breaks early on, but they do also have some really very talented players in their lineup, led, of course, by Raza. But it's going to be a very, very tough time for them in the Super 8. And you asked about Darren Sammy's coaching. Darren Sammy, of course, a fellow countryman of mine from St. Lucia, first West Indies player in the men's West Indies team, certainly from St. Lucia. We've had a number of women's players way back in the 1990s and up to the present time. But Darren Sammy, always been somebody who has that kind of mentality that he's about never say die. He's about really planning for the conditions and putting things in place to try to maximize whatever his current situation is. And I think he's doing that for the team at present. They've gone through some difficulties, not having always had their best squad available to them. But I think right now they are certainly on the right track. It's again going to be interesting to see how they come up against India and South Africa in the next couple of matches. But so far, certainly at the World T20, so good. And there's a comment from Aditya sir that Sammy was the most hated player for me, as he was the person who kicked out RCB, my favorite team in IPL 2020 2014, when I newly started watching cricket, and when I was a small child. I mean, the kind of power hitting he had, and especially they love the Asian conditions. If the Pakistan is going to qualify for the semis, and if West Indies and Pakistan is going to be for the semi spot, then what are the difficult going to be facing West Indies, because they are quite comfortable in these kind of wickets, but West Indies had, sorry, the spinning wicket.
of Sri Lanka is going to be difficult for them. And Oh, he'll yes, step absolutely. and Mm. step out Yeah, from Myers. yeah. Use for spinners, of course, Moti, Chase, Hussein. But in terms of batting, that's really where they tend to let themselves down. The batting unit is absolutely formidable. We see them certainly in the Indian conditions doing well. They have been mainstays, a lot of them, of franchise cricket around the world, including the IPL. But the batting against spin has been a long time. So it'll be interesting to see what that might look like should they face Pakistan in the semi-final. And here is our special guest, that is name क्रिकेट सर्कल और जैन सर, जो कि हमारे शो आई मीन इज द डायरेक्टर ऑफ अ शो, assistant director, because main director is coming in sometimes, and he's live now. He's the owner of a cricket circle and cricket 07. All right, well, Tavish, I'm going to Hey, hello, be Terry. signing. We have cricket coming in. You asking a question? No, just to Okay, say hi to okay, you, perfect. and your Thank you, team is thank you. playing really good. Hopefully, they will be in the final and lift the Well, trophy I would again in love India. that. I'll be in Belgium and France for the duration, but I assure you I'll be following very closely and watching as much as I can during the time that I am on vacation here with my wife. Great, great. Best wishes. Thank you, guys. Thanks for having me on. Well, it's all thanks to you by taking out some time, a precious time for the show, and coming to our podcast. Please come regularly. I hope you I will. will do, for sure. Thanks a lot, guys. Bye-bye. Bye bye. Bye. आदित्य भाई कमेंट में बोल रहे हैं वेस्ट इंडीज also have quality spinner and player like hope will be valuable if You better their call me and why. matches are Sri Lanka. This is Babu Podcast. So it wasn't in office. I was that's from my group. No, it was from the cricket group. They invited me to be on their thing. I jumped in. That's my personal brand. That's not Signature Times brand. Coffee and hot chocolate. Eh, eh. My thing. Because me a Russian. That's all right. So what? Step up. Step up, all of us. So it's 47 for 3 after after 6 overs. Zimbabwe is in a deep trouble. And sir, I hope you like our show. You like our conversation. You had some good knowledge about the cricket.
He's definitely not strong. So ऐसा सवाल पूछा आपने कि सीधा भाग गए। हाँ मतलब नहीं, एक्चुअली मैं बताऊंगा इसका रीजन क्या था उनके जाने आपका का, बट वॉइस ठीक है। ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है मेरा? अब ठीक हुआ। अब ठीक हुआ ना? हो, बट आई मीन एक अच्छा नॉलेज था उनके पास क्रिकेट का, और एक बहुत कहाँ से पकड़ बेहतरीन। के लाए थे कि ऐसे ही कनेक्ट हो गए रैंडम? नहीं नहीं, ये एक्चुअली क्रिकेट 360 वाले ग्रुप में ये थे, और इन्होंने मेरे को बोला कि मैं एज अ गेस्ट ज्वाइन करना चाहता हूँ। पर आप नहीं दिख रहे हो मेरे को आज, मतलब आप वो जो हाँ, कॉलिन के अंदर रहते थे वो नहीं दिख रहा है आपका। मतलब मतलब जैसे एक लोगो आता था ना, जैसे अभी इन जनाब का आ रहा था या किसी का भी आ रहा था, वो वैसा नहीं आ रहा। तो लोगो तो दिखा रहा है ना, मेरा लोगो क्रिकेट नहीं, सर्कल एक का को नहीं ब्लू दिखा कलर रहा। का। हाँ, तो आपका नेट स्लो है इसलिए आपको नहीं दिखा रहा। और ध्रुव भाई भी जुड़ चुके थे। नहीं, हम्म, अभी वापस से चले गए। ये तो आ रहे जा रहे, जैसे इस समय दिल्ली की बिजली होती है ना, वो बिल्कुल वैसा हाल है। पर क्या बैटिंग करी आज वेस्ट इंडीज ने, मतलब आपकी 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 बदौलत, थैंक्स टू यू, क्रेडिट गोज टू यू। आपने लाइव नहीं किया पहले इनिंग्स में, उन्होंने बना दिया 250। अब गुतकेश मोती आते हुए, अब सामने सिकंदर रजा है, कंसोलिडेट करने का बिल्कुल समय नहीं है। और अगर ये वेस्ट इंडीज बहुत बड़े मार्जिन से जीत जाती है जयंत भाई, तो फिर क्या लगता है आपको कि वहां पे कितना ज्यादा नेट रन रेट के अंदर इनका बढ़ावा होगा? क्योंकि 77 रन की जीत से ये प्लस 3.8 पे गए थे। तो अब अगर ये लोग 100 के ऊपर भी जीतते हैं। कहा जाता है कि अनिश्चितताओं का खेल है, बट इतना बड़ा स्कोर बना दिया, मिनिमम तो ये 100 रन जीतेंगे मिनिमम। आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे को तो भी कुछ लग ही नहीं पा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग बैटिंग कर रहे हैं ना, मेरे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है पूरी तरीके से कि क्या बैटिंग नहीं, करी इन लोगों ने। आप अरे नहीं, उनकी छोड़ो, आप सोचो ना जिम्बाब्वे कितना करेगी। उनका जिम्बाब्वे छोड़ दो, वेस्ट इंडीज ने 200 जो के किया वो तो छोड़ 200 के दो। आसपास जाएगा। और जब तक ये 200 रजा चला रहेगा। जाएगा, 200 जाएगा तो फिर कहाँ वो 3.8 के आगे जाएंगे, कम ही रहेंगे। नहीं, बट क्योंकि और प्रॉब्लम ये है ना कि जिम्बाब्वे को गया गया विकेट, क्लीन बोल्ड। और मुझे पता था 200 नहीं जाएंगे, मैंने इसीलिए बोला 100 रन से जीतेंगे, क्योंकि आप कर रहे हो ना कमेंट्री, लाइव चल रहा है, विकेट जाएंगे ही जाएंगे। और क्या बॉल था यार ये मोती का। आई मीन मोतिया बिन कर दिया है पूरी तरीके से। वो छन से जो टूटा है सपना जिम्बाब्वे क्रिकेट का, एक जो फेरी टेल चल रही थी, उस फेरी टेल में आज वो फेयर नहीं हुआ है जिम्बाब्वे के साथ। सामने खड़ा कर दिया वेस्ट इंडीज को, इतना फ्लैट ट्रैक कि पूछो ही मत। पर यहाँ पे ओस नहीं आ रही है जयंत भाई। एक बात तो अच्छी देखने को मिली है कि वेस्ट साइड ऑफ द सिटी, वो स्टेट में ओस नहीं आती। कल भी नहीं आई थी गुजरात में, आज भी नहीं आई है मुंबई के अंदर। बट रविश भाई, एक कहावत तो फिर से आज सही हो जाएगी, कैचेस विन यू मैचेस। क्योंकि सिमरन हेटमायर जिन्होंने इतना ताबड़तोड़ 250 के स्ट्राइक रेट से धोया है, उन्होंने उनके कैच 2 बार ड्रॉप हुए हैं। एक 9 रन पे, एक 9 रन, 70 रन पे। यस, 70 रन तक तो आई थिंक उन्होंने ऑलरेडी डैमेज कर दिया था, बट 9 रन पे अगर वो चला जाता, और आई थिंक उनके 3 विकेट शायद चले गए थे पहले ही, 2 या 3 विकेट, तो वेस्ट इंडीज आज शायद 250 की जगह 180 170 ही पहुंच पाती। बट वही है, जब, और आई थिंक दोनों बार एक ही फील्डर ने कैच ड्रॉप किया था। और दोनों तो बार मैं एक गेंदबाज भी एक ही थे। एनालिसिस सुन रहा था फाफ डुप्लेसिस का, तो वो बोल रहे थे कि एज ए फील्डर जब आप एक कैच ड्रॉप करते हो ना, तो आपको लगता है कि यार कितना खराब हुआ, जल्दी से जल्दी मैच खत्म हो। और जब आप दूसरी बार 2 बार कैच ड्रॉप करते हो, फिर ढूंढते हो कहाँ पे गड्ढा है, जाके छुप के छुप जाए।
आपने एक मैच में कितने मैक्सिमम कैच ड्रॉप किया है बताओ, आपको एक्सपोज करते हैं। यार देखो, मैं जहाँ पे फील्डिंग करता था ना, वहाँ पे कैचेस ही नहीं आते थे इतने। तो आई मीन मैंने ज्यादा इससे कैचेस ड्रॉप ही नहीं किए। कंसिडर मेरे को तो बड़े सेफ जगह फील्डिंग करवाते थे ये लोग। आई मीन या तो फाइन लेग पे या फिर थर्ड थर्ड मैन पे। मुश्किल से दो या तीन, एक आधा कैचेस आते होंगे, जो भी तुक्के तुक्के में पकड़ लेता जाऊंगा। पर ये जो और ये कैच मतलब छूट गया, यहाँ पे 4 मिल गया सिकंदर रजा को। और अच्छा शॉट, ओवर की समाप्ति इस ओवर से आ गई। कुल 10 रन पर एक विकेट दी गई मोती के ओवर में। और जहां तक मेरी फील्डिंग की बात की ना जयेंद्र भाई की, आई मीन वहां पे जब मैं भाग के आता था अपने रनअप के लिए, अरे बहुत दूर लगता था यार, बहुत जोर आता था। मतलब थर्ड मैन या फाइन लेग से आप सीधा अपने रनअप पे आ रहे हो ना, इन भाई किस जन्म का बदला निकाल रहे हो यार। कई बार तो ऐसा लगता था। और पता है जहाँ पे जयंत भाई, जहाँ पे ना एक वो फील्डर हुआ करते थे कि मतलब जो एक बैटर हुआ करते थे, थर्ड मैन पे बड़ा अच्छा सिंगल लेते थे, वहां पे मेरे को खड़ा ही नहीं करते थे। बोलो, हैं। बोला तो सिंगल का डबल दे देगा, कोई मतलब नहीं बनता। चुपचाप बॉलिंग पे ध्यान दे। फील्डिंग में विवेक भाई बड़े अच्छे हैं। उन्होंने मेरे 2-3 शॉट्स रोके थे जब वो खेलने आए थे लास्ट टाइम। वो एक अलग बात है कि जब वो सारे के सारे जो शॉट्स है ना, वो खुद ही अपने आप उनके पास आए जा रहे थे। पर ये वेस्ट इंडीज से डर लगता है जयंत भाई। और जिम्बाब्वे भी थोड़ा मनी मन खुश रहेगा, क्योंकि भारत के सामने जो मैच है वो चेन्नई के अंदर है। एंड चेन्नई में टर्न होती है, बड़ी बाउंड्रीज है, परेशानियों का सवाल भी है, क्योंकि सिकंदर रजा और चेन्नई की सूटेबल कंडीशंस रहेगी वहां पे जिम्बाब्वे के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सिचुएशन है श्रीलंका की तरफ। क्या कहना मैं तो चाहेंगे इसे आप? आप कंटिन्यू कीजिए, मुझे एक कॉल आ रहा है। हम्म, आएंगे वापस से। शिमार जोसफ, क्या गेंदबाज रहा है यार ये खिलाड़ी भी। मतलब इनकी भी अलग वो रहे हैं। अफगानिस्तान के सामने 4 विकेटें और रॉ पेस है इनके पास। इस समय तो दोनों ही बल्लेबाजों के वो बल्ले पे टच ही नहीं हो रही है गेंद। वो शरीर लग के जा रहा है, वहां पे सिंगल निकाल रहे हैं। और रजा के बल्ले पे टच हुई है और गेंद गई है बाउंड्री पार। क्या बात है रजा, आपकी यही है रजा। 7 रन आ गए 3 गेंदों के अंदर ऑलरेडी। अब रिक्वायर्ड रन रेट वो हाथ से बाहर निकल चुका है। पंद्रह 4 रिक्वायर्ड रन रेट हो गया अब तक।